Good morning, students. We have introduced Pascal law and studied one of its application, hydraulic lift. Another application of Pascal law is hydraulic brake. Basically, it consists of a cylinder, as I will draw its diagram. So first of all, I'm just taking that like this is a tube which is connected to this master cylinder. This is M. I can denote it by M or by another symbol. Now this is master cylinder and it is filled with brake oil and provided with airtight frictionless piston P. Here is a piston, this is airtight. So here the liquid that is filled, this is brake oil. The piston, this piston is connected to a brake pedal. This is the brake pedal F. This is connected to a brake pedal F through a lever arm. This is a lever arm, this is L. So first of all, hydraulic brake, it consists of this master cylinder to which this piston is connected, which is connected to this brake with the help of this lever arm. Now this master cylinder is connected to the wheel cylinder through this tube. This is, let it be tube T, and this is connected to wheel. This is connected to other wheels. Now the wheel cylinder is having, अब यहाँ पर क्या है, this tube, this is connected to one wheel, another part is connected to this other wheels. So now this wheel cylinder is having two pistons. Like you have also to draw the figure. So here these are two pistons. Let these pistons are P1 and P2. These pistons are connected to brake shoes, and here first of all I will just complete the figure. I will draw this wheel like of structure, and from here I will also draw surrounding part. And now these two pistons, these are connected to brake shoes. Here this is one brake shoe S1 and this is another brake shoe S2. They should be symmetrical, properly circular in shape. So now the similar system is connected to all the wheels of the vehicle. यहाँ पर हमने एक wheel के साथ system जैसे connected है उसको दिखा रहे. So now this is like this kind of structure. So this is the brake, hydraulic brake. Now what is its working? So when the brake pedal is pressed, यानी इस पैडल को जब प्रेस किया जाता है, so the lever system operates. The system operates, and what will happen that this piston P of the master cylinder, it is pushed inward. This piston P is pushed inward. So what will happen? Basically, when this piston will be pushed inward, there will be increase in the pressure. There is a liquid, this brake oil is filled all over here. So when this lever arm is pressed, then this piston is moved inward, and hence what will happen? There will be increased pressure on the liquid at P. यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर होगा. अब ये प्रेशर कहाँ जाएगा? इट विल बी ट्रांसमिटेड इक्वली, यानी यहाँ से देखिए थ्रू दिस ट्यूब इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू पिस्टन्स P1 and P2 of the wheel cylinder. How? As per Pascal law. As we are taking it, the one of the application of Pascal law. So basically हमें क्या पॉइंट देखना है कि प्रेशर एक पॉइंट पे जो अप्लाई किया हुआ है वो सभी पॉइंट पर इक्वल अमाउंट में ट्रांसमिट होगा. तो यहाँ पे लिवर आर्म से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, दिस विल बी ट्रांसमिटेड ड्यू टू विच दीज टू पिस्टन्स विल मूव. सो नाउ व्हाट विल हैपन? अब यहाँ से लिक्विड जब अंदर आएगा तो इट विल एक्सर्ट pressure on the pistons, then correspondingly these two pistons will move outward. So they force the brake shoe. अब इसके corresponding ये जो brake shoes हैं S1 and S2, they force the brake shoe to move away from
each other. Now which in turn pressed, अब यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर एक हमने स्प्रिंग जैसा अरेंजमेंट भी लगाया हुआ है, let it be S. So what will happen that now these brake shoes, you can say that they force, these pistons force the brake shoe to move away from each other, which in turn press against the inner rim. This is pressed against the inner rim, and hence this will reduce the motion. This will retard the motion of the wheel. So in this way, this brakes will be operative. अब अगर हम ये कहते हैं कि now when this pressure is released on the lever pedal, so what will happen? These brake shoes that will return to the normal position. कैसे आएंगे? अब इसके लिए हमने एक स्प्रिंग यूज किया S. So with the help of this spring, these two brake shoes will be returned to the original position, and hence piston will move to the original position when this lever arm is released. So basically अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसकी वर्किंग में क्या कहेंगे कि जैसे ही लीवर आर्म को प्रेस किया, पिस्टन अंदर गया, पिस्टन अंदर के जाने से जो इसके अंदर ब्रेक ऑयल जो हमने फिल किया है, इसकी वजह से प्रेशर ट्रांसफर होगा, सो दैट ये पिस्टन्स P1 P2 आउटर जाएंगे. आउटवर्ड जाने से ये जो ब्रेक शूज हैं ये इनर रिम के क्रॉस प्रेस हो जाएंगे, जिससे कि ब्रेक्स ऑपरेटिव हो जाएगा. जैसे कोई भी ब्रेक, साइकिल में भी आप देख सकते हो, साइकिल में जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हैं तो क्या होता है किसी भी व्हीकल में, देन समथिंग सम ऑब्स्टिकल इज प्रेस्ड अगेंस्ट द व्हील. तो इसी तरीके से यहाँ पर ये ब्रेक शू भी क्या है, इस रिम के अगेंस्ट प्रेस हो जाते हैं, जिसके मोशन को, व्हील के मोशन को रिटार्ड कर देते हैं. और जैसे ही ये लीवर आर्म रिलीज करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है दैट विल हेल्प टू रीस्टोर द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ दिस, you can say, brake shoe, and hence it will restore the position. So in this way this hydraulic brakes is operative. Hydraulic, why we have said it hydraulic? Because some liquid is filled within the tube. So this is also an important application. Sometime there can be the question, discuss what is hydraulic brake, explain its working with the principle. So principle is Pascal law. Now after this, next few terms we are discussing before discussing another important topic, that is surface tension. So first of all, let we understand what is intermolecular forces. So intermolecular, देखिए टर्म से ही क्लियर हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच वाला फोर्सेस. So the force between molecules of a substance. This is called intermolecular forces. Now, what are the different types of these intermolecular forces? So this is of two types. First, I am discussing force of addition or adhesive force. And next is force of cohesion or cohesive force. So first of all, this force of addition. Now, how can we differentiate between these two forces? Basically, it is adhesive force. It is a force of attraction between molecules of different substance. Means force of attraction. Main point क्या ध्यान रखना है? Between molecules of different substance. Right? Example, you know that the water, अगर आप ग्लास में water लेते हैं तो क्या होता है, surface of the water glass that will get wet, right? So water wets the surfaces of a glass container. Why? This is due to this force of addition. Similarly, while I'm writing, this writing on the paper or on the board, anywhere it is possible, because force of attraction between two different surfaces, this pen tip as well as this paper. So there can be another, adhesives can work. Adhesives yani fevicol, gum, gluing material, right? Such also work due to this force of attraction between two surfaces. That means उस attraction की वजह से surfaces are bound together. So force of addition is different for different substances. Now next is force of cohesion. See cohesion. Now it's reverse. It is a force of attraction between molecules of different substance, but this is
force of attraction between molecules of same substance. Same substance, how can we understand it? Like we can say the force between, अगर हम water molecule लेते हैं तो water molecules के बीच में जो force of attraction है वो है cohesive force, यानी molecular force, molecules के बीच में जो attraction force है that is cohesive force. Now cohesive force in case of, you can say, solid is stronger as compared to liquids, and which is stronger as compared to gases. So basically it is a more force of attraction between the molecules. Solids में ये वाला force stronger होता है. अब अगर हम ये देखें कि mercury does not wet the surface of glass, जबकि हमने कहा है water can wet the surface of glass. This is the reason why, because in mercury force of cohesion is stronger. Just यानी मर्करी के मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्गर है सो दैट इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द एडिसिव फोर्स बिटवीन मर्करी एंड द ग्लास सरफेस. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट it cannot wet the surface of the glass, whereas water can wet the surface of the glass over which it is poured or in which it is contained. So this is basic concept we have introduced of the types of intermolecular forces. Now next term, intermolecular binding energy. So intermolecular binding energy of a liquid is the minimum energy required for what purpose? To separate two molecules of liquid from each other influence. It means किसी भी लिक्विड में अगर दो मॉलिक्यूल जिस एनर्जी से एक दूसरे में बाउंडेड है यानी अट्रैक्टेड है, उतनी ही एनर्जी अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएं सो इट विल बी सफिशिएंट एनफ टू सेपरेट द मॉलिक्यूल. सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने ग्रेविटेशन के यूनिट में भी किया था. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी here we are taking for intermolecular binding energy, but the general concept is same, that it is the minimum energy required to separate the two molecules of liquid here from each other's influence. Now another term which I am taking, that is molecular range. See, what is molecular range? Molecular range, that means मान लो अगर ये एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का इस दूसरे मॉलिक्यूल पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आप किसी भी मैटर में ले सकते हो, तो जिस पर्टिकुलर मैक्सिमम डिस्टेंस तक इट विल exert a force and that force is measurable, so that is molecular range. So how can we define it? It is the maximum distance up to which a molecule can exert some measurable attraction force on other molecule. So it is a maximum distance up to which a molecule can exert a force on other molecules. यानी जिस पर्टिकुलर एक रेंज होती है, ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट डिस्टेंस पे और आप एक मॉलिक्यूल सेंट्रल मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है. सो इट इज़ अ मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी जिस मैक्सिमम पर्टिकुलर पॉइंट तक ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा सकता है, दिस इज मॉलिक्यूलर रेंज. तो नेक्स्ट टर्म इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को समझने के लिए अगर हम ये ट्रीट करें कि मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ सेंटर पे है और मॉलिक्यूलर रेंज जो हमने ये स्पेसिफाई की है, ये इसकी रेडियस लेके, यानी एक हम ऐसा रीजन बनाएं जिसमें मॉलिक्यूल सेंटर पे हो और उसकी रेडियस किसके इक्वल हो? मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल हो. सो दिस इज द इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज द रेडियस. So it is the imaginary
sphere drawn with molecule as center and molecular range as radius. So what can be the possible value of this molecular range? Basically, this molecular range can be of the order of 10 raised to the power minus 9 meter for solids and liquids. Surface fill. What is it? It is the topmost layer of the liquid at rest with thickness equal to molecular range. And although molecular range is very small, मान लो हम ये कहें कि ये लिक्विड की बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है जिसकी थिकनेस molecular range के इक्वल है. Actually it exists, but we cannot just see it as a separate layer. So it is the topmost layer of liquid at rest with thickness equal to molecular range. So these are few definitions you must be knowing, you must learn it, and on this basis we can explain another important concept, that is surface tension, where we can use these 3-4 terms which I have explained as a you can say an explanation part of it. So directly when I will use the term surface fill, sphere of influence, molecular range, then you must be knowing these terms. Now coming to the concept of surface tension. Now this surface tension basically it is a property of a liquid but under rest condition. When the liquid is in motion, we are not talking about it. We are saying this is the property of the liquid at rest. इसमें हम 2 terms को discuss करेंगे. First of all, I will explain each term separately, then I will combine it. See, as we will say that it is a property of a liquid by virtue of which free surface of the liquid at rest, especially the condition of rest, this tend to have minimum surface area. We tend to have minimum surface area, and as such it behaves as if covered with a stretched membrane. So it is a property of a liquid at rest with the help of which, or you can say by virtue of which, free surface of liquid at rest tend to have minimum surface area. सबसे पहले हमें समझना है minimum surface area का क्या मतलब है. See, as it has been found that liquid in small quantity, कितना small quantity, like आप एक liquid drop की बात करें, right? When you are taking a liquid drop at rest position, so you can say that it always tend to have spherical shape. Since for a given volume, sphere tend to have least surface area, so it will tend to have minimum surface area. So while doing so, अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें कि हमारे पास नंबर ऑफ शेप्स में स्फेरिकल शेप हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया, इस चीज़ को समझ सकते हैं आप. जैसे कि एक लिक्विड ड्रॉप है, अगर टैप से सिंपल ड्रॉप्स आ रही हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, तो दैट आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप. या अगर आप देखते हैं कि रेन जब अर्थ पे फॉल करती है, जो ड्रॉप्स होते हैं वो क्या बनते हैं, सर्कुलर रिंग्स बन जाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट रिंग्स आते हैं. और एक्चुअली जो ड्रॉप्स आते हैं दैट ऑल आर इन स्फेरिकल इन शेप, right? So this will indicate that these tend to have minimum surface area. So basically next point is as if covered with a stretched membrane. सबसे पहले stretched membrane का concept समझने हैं. इसका मतलब क्या होता है, like अगर आप कोई बहुत thin sheet लो, प्लास्टिक शीट लो, बहुत थिन फाइन शीट लो, और उसके ऊपर कोई रबर प्लेस करो, कोई मेटेलिक आप नेल प्लेस कर दो, तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग का मतलब समझना है पहले हमें. तो ये जो सरफेस है उसके वेट के इन्फ्लुएंस में कुछ यहाँ से स्ट्रेच्ड हो जाएगा,
जैसे ये तो थोड़ा पेपर सॉलिड है, अदरवाइज हम एक बिल्कुल प्लास्टिक शीट लेते हैं, पॉलीथीन लें और उसको स्ट्रेच करें और उसके ऊपर हम कोई भी हेवी ऑब्जेक्ट रख दें, रबर, पेन, पेंसिल, तो हल्का सा उसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड पोजीशन में नजर आएगा. तो दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड. यानी हालांकि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के लिए, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिक्विड. हम सिर्फ इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है. अब उसको हम लिक्विड में कैसे अप्लाई करते हैं कि मान लो हम क्या कहते हैं कि अगर हमने कोई लिक्विड लिया और लिक्विड यहाँ पर किसी भी कंटेनर में या कहीं पर भी है, लिक्विड एट रेस्ट पे है. अब अगर इसके ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा या कोई नेल रखा या कोई इंसेक्ट बैठा है, तो इसके नीचे वाला सरफेस यहाँ पे स्ट्रेच हो जाता है. So now we have combined these 2 points here, that it is a property of a liquid at rest, which according to it, by virtue of which free surface of liquid tend to have minimum surface area like this, and as such it behaves. यानी इसका मतलब क्या हुआ, minimum surface area का मतलब क्या हुआ, it behaves as if covered with a stretched membrane. Like now we will give its application so you can get more clarity. अभी हमने सिर्फ एक definition को explain किया है. Now next point is measurement of surface tension. This measurement is also an imaginary concept. Like if I'm just showing here, like this is the top view of the liquid surface. ठीक है. तो अगर हम ये कहें कि मान लो हमने एक लाइन इमेजिन की है, कोई भी लाइन ले लो, ए बी पी क्यू एनी. सो इमेजिन दिस लाइन इज ड्रॉन टेंजेंशियल. टेंजेंशियल यानी मान लो अगर हमारा जैसे ये टॉप सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, तो अगर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये लाइन रखी, तो ये पेन एक तरह से लाइन है जैसे मैंने ये ड्रॉ किया है. सो इमेजिन दिस लाइन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली एनीवेयर ऑन द लिक्विड. So now force of surface tension, this will act at right angle to this imaginary line drawn, and this is on the both the sides and also along this line. जो force of हमने force लगाया surface tension का, ये इस imaginary tangential line के perpendicular है, लेकिन again ये भी tangentially लग रहा है. So if I have to just give it a definition, how can we measure surface tension? That surface tension of a liquid is measured as force acting on unit length of a line imagined to be drawn tangentially. Everything I am writing in the definition कि line हमने कौन सी ली है, force कहाँ लग रहा है. Of a line imagined to be drawn tangentially anywhere on the free surface of liquid at rest. So basically it is force acting on unit length of a line imagined to be drawn tangentially. यानी हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, मतलब उसकी हमने लेंथ कोई भी इमेजिन कर लें, एल कर लें, तो इस पर जो लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट लेंथ या फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लाइन इमेजिन टू बी ड्रॉन टेंजेंशियली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दिस इज मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन. एंड इट एक्ट्स at right angle to this line on both the sides, and also along tangent to the liquid surface. It must be clear कि हम किस लाइन पर लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, और साथ साथ ये जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये सरफेस के तो टेंजेंशियल ही रहेगा और इस लाइन के परपेंडिकुलर है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ मैथमेटिकली इस सरफेस टेंशन का मेजरमेंट हम क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो नाउ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट, दिस यूनिट विल बी न्यूटन पर मीटर, और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर. And the surface tension, it is a scalar quantity. Why? Because it has no specific direction for a given liquid. So this is a just introductory concept of surface tension. So revise all the concepts
thoroughly, understand the concepts. In my next video, I will cover its application. So learn the definition, understand the concepts. Thank you. Have a nice day.